Okay. Yes, so before I start today's webinar, I also want to address one very important question that one of the listeners had asked earlier after the last webinar. So so this person had asked me, does therapy also involve the same thing where I give does therapy also involve giving self-help tips to people? Is that what therapy is about? So, if any of you also have a similar question, this is a very, very important question to ask. And thanks to him that he asked me this question. So, I'm answering this question as well. So, no, therapy is not about this. Therapy is not about self help things and self help strategies. All of this you are easily available on Google. You do not need to be a therapist for any of that, right? Google पे भी है. There are many self-help books that you can read, and there's so much self-help content that is available there. थेरेपी का काम सेल्फ हेल्प वाला नहीं होता. So in terms of what therapy does, it is basically a tool, or it is basically a framework which helps you to deal with your mental and emotional issues in a manner so that it can help you to resolve those things, and it can help you to do the things that you want to do in the present in a more conducive manner. So let's say if a person is telling me that they're feeling very, very anxious and that anxiety is not letting them study well before the exam, and that is why every time that they go to give an exam, they flunk just because they're not able to manage the anxiety. Otherwise, their preparation and everything throughout the year is fine, but as soon as the exam comes near, they feel that their anxiety goes to a very high level and they're not able to manage that, and because of that their exam day performance deteriorates. So in those cases, as a therapist, I would help them to manage those thoughts and emotions and other other factors that might be there, which are producing that anxiety. And once those anxiety producing things are catered to, the person can then focus on giving the exam in a better manner and hopefully do a better job at giving the exam as well, right? So therapy is not about self-help tools and giving advice, or as a in Family Man season 2, it was shown that the therapist that this lady had gone to, that the therapist was only giving gyan and only giving advice. So no, therapy is not about that, right? So just wanted to make that clear before we begin. All right. So now coming back to the topic of time management. All right. If any of you can keep your cameras on, that would be really great, because I feel very awkward talking to a blank wall in front of me. So that's a request. If any of you need some time to open your cameras, please do so. Anyway, let me start with the topic. And I'll try to wrap up the webinar as soon as possible. Okay. So before we move into how we can, the strategies of better time management, or what we can do in order to manage our time better, let us first understand a psychological model which talks about how we represent time in our minds, or how time is perceived by different people. Uh, so in this particular model, we actually have three types of time representations. But for the context of what we have to discuss here, I'm only going to discuss two because only those two are relevant. The third one is not so relevant in the context of what we are going to discuss ahead in terms of time management and consistency and so on, right? So when it comes to psychological model of time representation, this model classifies people into three categories, but we are looking into two. So one is in time, and the second category is through time. So in time people would be people who get associated with time while they're doing certain actions. So people who are really present in the moment. People who can focus on only one task at a time, and they do not like to switch a lot between tasks. And they are they are somebody who can experience the state of flow very easily. Does anybody know what the state of flow is, or has anybody experienced the state of flow? Yes, no, maybe. Guys, are you all sleepy already? अरे नहीं पता तो ये बोल दो ना कि नहीं आता. I'll move ahead with that. Anyway, so state of flow would be कि okay, so let's say you were studying and you were so lost in studying and you enjoyed your study session so much कि time का पता ही नहीं चला. You sat at, let's say, 12 p.m.
and it was already 5 p.m. and you had no idea whatsoever कि time कहाँ चला गया. So when you enter that kind of a flow, that kind of a state where you are so engrossed, so fully engrossed in whatever you are doing, that you have absolutely no idea of the time and क्या हो रहा है, क्या आसपास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, and you're just engrossed in that activity that you're doing. That is the state of flow, and this is a very very good state to be in when it comes to being productive and having a very high productive session. So if if you're able to enter that state of flow, that really helps. And in time people generally have a uh, they have a stronger tendency of being able to enter this state of flow, right? And these people, they prefer that whatever task that they're doing, that they should be able to complete that task, rather than they rather than evaluating whether, okay, I'm completing this much today, I'm completing that much day after tomorrow, and I'm doing this the third part of the task 3 4 days later, and so on. So they don't like breaking the task into multiple chunks and doing those tasks at different points of time. They prefer, like, if I'm doing something, I want to do it and I want to do it till completion. So they generally prefer that. This does not mean that they are unable to break down things and they'll not be able to do that. ऐसा नहीं होता. But in general उनकी जो natural tendency या natural preference है, वो इस तरफ है that they would like to complete a task when they have started something, rather than breaking that task into multiple chunks and doing something today, doing the other part tomorrow, doing the other part day after tomorrow, and so on, right? And they don't generally prefer switching between tasks or taking a lot of breaks between tasks. So these are in time people. Now coming to through time people. So when it comes to through time people, they are very good at seeing the consequences of the actions that they take. So they are able to link between past, present, and future. So what are the actions that they take? Just one moment. Just a second. So through time people, they are able to create a linkage between what are the actions that they took in the past and what are the consequences of those actions today. What are the actions that they can take today, which will have a consequence in the future. And because they have a bird's eye view of the entire timeline that they are living in, so they're good at planning and strategizing. So there are people who would, who can create a 9 month plan, they can create a 10 month plan, they can create a 1 year plan or 5 year plan, and so on, with a lot of ease. And then there would also be people who would, who would struggle with coming up even with a 3 month plan. Forget about having a very longer period of time, right? So people who are very good in planning, who are very good in strategizing, these are through time people. They can, they can look back in time and, they can see, okay, I took these steps, and they can very easily point out, okay, this was the point where things went wrong. And so that naturally makes them very good troubleshooters. So imagine in a in a corporate scenario, if you have somebody who's very good at planning and who can also look at how the things were implemented and where things went wrong. These are very, this is a very important skill to have, right? And these kinds of people, they prefer overall outcome of the task. They prefer the outcome of the task more than that I need to immediately finish the task as it is, right? So now when it comes to in time people and through time people, it's not a very black and white categorization as such. One person might be in time for one kind of activity, but through time for another kind of activity. Let's say I'm very in time when I'm engaging in my hobbies. So when I'm creating paintings, when I'm painting, or when I'm drawing something, I'm very in time. I get lost while I'm doing that activity, but I'm very through time when in terms of how I want to strategize and how I want to grow my business. Let's say, right? So I'm the same person, but I'm in time in one activity in one area of life, but I'm through time in another area of life, right? So now how does this help us? कि ठीक है, हम लोगों ने इतना ज्ञान तो सुन लिया, but अब इसका करना क्या है? Why is this not working? हाँ, हो रहा है. Okay. Okay.
So how time perception affect time management and consistency? First of all, coming back to in time people, because they're more focused in the present. So people who might realize, okay, like, I'm more in time when it comes to studying, when it comes to UPSC preparation, I'm more in time. So they're more focused on the present, and they are highly productive in immediate tasks that they have to do. So instead of telling you कि आप 6 महीने में आप पूरा अपना रिवीजन करो, if you just tell them that you have to finish these many chapters today, they would be more productive with that rather than you telling them कैसे तुम्हें 6 महीने में इसका 3 बार रिवीजन करना है, and you leave them at that, right? And because of their tendency to be more focused in the immediate task, on the things that require the immediate their immediate attention, they might have a tendency to procrastinate on things that have a more distant thing. So a lot of us, you would have noticed that a lot of us, until and unless it is almost like the last month or like 2 months before the prelims exam, they don't even pick up CSAT. Why? Because वो immediate task नहीं है, वो immediate urgency नहीं है, right? And they might struggle with that कि अच्छा अब 2 महीने में सीसैट कैसे करना है, बिकॉज अभी तो जीएस भी रिवाइज करनी है, सीसैट भी करना है, दैट इज अ सेपरेट मैटर. But in general, they might have a tendency. So in time, people might have a tendency. Not saying that they will always have this thing, but they might have a tendency where they're procrastinating on distant tasks. चीजें जो मुझे आगे भी हम कर सकते हैं, जिसका कोई immediate consequence नहीं है, right? And they work better with the short term deadlines over longer term deadlines. As I already gave an example कि अगर आप उनको ये बोलो कि आप आज के दिन मुझे ये चीजें आप पढ़ के आप दे दो, and I'll ask you questions, in time people might do a better job at that rather than if you tell them कि कि आपको पूरे 6 महीने में आपको 3 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करने के बाद I'll ask you. तो फॉर अ लॉन्गर एनीथिंग विच हैज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, it's not very comfortable for them unless and until you break it down, or they themselves break it down into smaller chunks, so that they can focus on one chunk in one point of time, and they have that वो गोल उनका बन जाए कि अच्छा, मुझे ये इतना चंक करना है सिर्फ अभी, right? That reference could be one day, it could be 1 week, it could be 3 4 days, whatever. That depends on person to person, but overall general idea if I'm giving. uh, so if I talk about myself, when I'm painting, I always prefer paintings that I can complete in one day when I'm starting them. So I prefer watercolors or acrylic colors paintings. But I don't generally prefer starting an oil painting just because उसमें time लगता है. You do one layer, you wait for it to get dry up, you wait for it to get dried, फिर उसके बाद आप दूसरी लेयर करते हो, फिर उसको सूखने का इंतजार करो, फिर तीसरी लेयर, and so on. And that is why I don't generally do oil paintings, just because इतना मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा होता. I just want to do it, and I want to get done with that thing in one go, and I want to enjoy the process, right? Now coming to through time. So people who are through time, they would because they have the ability to visualize their timeline, so they can visualize longer term plans better, and it allows them to work with distant timelines better. So अगर आपने उनको बोला कि अच्छा 3 महीने में आपको 3 बार रिवाइज करना है, so in their mind they will quickly be able to allocate that time कि अच्छा ठीक है, I need to revise 3 times, मुझे 25 दिन देने हैं लास्ट रिविजन में, मुझे इतने दिन देने हैं सेकंड लास्ट रिविजन में, that means I'm left with these many days to do the first revision. इस फर्स्ट साइकिल में आई डू दिस थिंग्स, मतलब पहले पॉलिटी, फिर इसमें इतना कितना टाइम देना, उसमें कितना टाइम, उनके दिमाग में ऑलमोस्ट इंस्टेंट प्लान्स बनने लगेंगे कि अच्छा ऐसे से ब्रेकअप करेंगे, एंड दे वुड नो हाउ टू गो अहेड विद दैट. अब वो बात अलग है कि हाउ मच दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट और नॉट, वो एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट उनके दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि अच्छा लॉन्गर टाइम के लिए भी अगर कुछ करना है तो उसको कैसे करना है, right? And because of this ability, they are able to switch between tasks very easily. So let's say अगर उन्होंने ये उनको ये they have decided कि अच्छा मुझे till December I need to finish my optional also, I need to finish let's say ethics also, मुझे दोनों चीज साथ में पढ़नी है. So they are very easily able to manage between these things कि अच्छा फर्स्ट हाफ में मैंने ऑप्शनल पढ़ा, सेकंड हाफ में मैंने एथिक्स पढ़ लिया. In time, people would generally feel little bit discomfort in switching between subjects, just because they would prefer कि अच्छा एक चीज पहले खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, right? And I was that person when it came to studies particularly, कि I would really prefer that if I'm doing one subject, उसको एक
ठीक ठाक लेवल पे कंप्लीशन पे ले आओ एंड देन स्विचिंग टू द अदर थिंग रादर देन लाइक डूइंग टू थिंग्स ऑन द सेम डे। मतलब वो मुझसे हो ही नहीं पाता था जितनी भी कोशिश कर लूं मैं। एनीवे, yeah, so they can switch between tasks easily, and they're okay with breaking the task into smaller chunks which they can complete at different points of time, right? So why does it matter? By understanding how you routinely perceive time, you can design a routine that works for you. So people who identify themselves keep in terms of studying, I'm an in time person. So for them, focusing on revising one subject at a time would be a better strategy rather than revising multiple subjects in one day, राइट? एट मैक्स यू कैन डू टू सब्जेक्ट्स, जहाँ पे एक सब्जेक्ट, जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है। सो लेट्स से इफ यू आर स्टडीइंग जीएस इन इन मेजॉरिटी हाफ ऑफ द डे, लेट्स से आपने सुबह से शाम तक आप जीएस कर रहे थे, एट अ लेटर टाइम यू पिक अप सी सैट, एंड बिकॉज इट्स अ मतलब वो अभी बिल्कुल ही डिफरेंट स्किल सेट आपका यूज हो रहा है सी सैट में, तो यू आर एबल टू मैनेज दैट थिंग, राइट? बट आपको ये बोला जाए कि अच्छा आप पहले आप फर्स्ट हाफ में आप मतलब फॉर द मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू आर डूइंग सी सेट, यू आर डूइंग जीएस, एंड लास्ट के एक दो घंटे में आपको ये क्या कहते हैं, आपको ऑप्शनल करना है, माइट बी अ चैलेंज फॉर सम पीपल। एटलीस्ट इट यूज्ड टू बी द केस विद मी। नॉट श्योर हाउ मतलब कितना किस पे अप्लाई करेगा, बट मेरे साथ तो ये होता था कि मुझे एक बार में एक ही चीज करना पसंद था, राइट? ऑन द अदर हैंड, पीपल हु आर थ्रू टाइम, they would be better at revising, so they just have a better knack for revising two or more subjects easily, and they can divide the day into different blocks of time कि अच्छा लाइक फर्स्ट हाफ में मुझे लेट्स से फर्स्ट हाफ में मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सेकंड हाफ में मुझे सीसैट देखना है, थर्ड हाफ में मुझे करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं या ऑप्शनल रिवाइज करना है, and they can very easily categorize like create those blocks of time in the day and they can do those things easily, right? So they might take a longer period of time to finish one subject, but they're doing multiple things together. On the other hand, in time people would prefer कि मैं 2 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करके इसको कोने कर दूं, एंड 2 या 3 दिन में and pick up the other subject in the on the next day, right? So and there's no right or wrong way of doing this. It's just that if you know how you work better, so instead of fighting with yourself, if you're just able to implement the things in the way that you work better, that's an added benefit to you. I remember when I had joined a very famous coaching, uh, like, when I just started preparation, and one of the teachers there had suggested that you should study two subjects in a day, and apart from CSAT, so two subjects plus CSAT, and I tried everything to do this. Like, I wanted to, let's say I started with geography. So I was studying geography in the morning. Did it till lunch break. After lunch, I tried to I tried to pick up optional ki chalo acha optional kar lete hain. But my mind was already in geography because I felt like, I had to leave it in the middle. I can like the topic was still left somewhere and I was constantly being reminded of that thing that I need to go there and complete it. I would again go back to geography, again switch back to optional, then realize, okay, I did not have enough time for optional because now it is time for me to do CSAT. And I wasted almost 1.5 months just juggling between these things until I realized that, that this is just not working for me. I would rather focus on one thing, do it to my, do it to a good level of completion and then move on, right? So while the advice in general was not wrong, because a lot of people would actually be able to benefit from that advice, especially people who are through time. But that advice in itself was not universally applicable to everyone, right? So, and that is why we always say that whenever you're giving an advice to somebody, always remember that you are giving an advice from your perspective. The receiver is taking the advice from their perspective. And as a receiver of an advice, you should always remember the same thing, that the person giving you the advice is giving advice from their perspective. You have to implement that same advice in your perspective. So see what is working for you. And when it comes to UPSC preparation, it is very, very important that you work in a manner which suits you the best. So instead of fighting with how you work, how you naturally work, if you just go with whatever is working for you the best, that would be a better and a
अ मोर सॉर्टेड आउट वे फॉर यू। जितना आप खुद से कम स्ट्रगल करोगे उतनी आपके पास एनर्जी ज्यादा बचेगी कि अच्छा यूपीएससी का सिलेबस खत्म कर लें। पर चला वो आइडियल शेड्यूल फॉलो करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओ तो उसका तो फिर क्या ही फायदा। आइडियल शेड्यूल भी फिर आइडियल कहाँ रह गया। सॉरी। ठीक है। All right now. So, the idea of why I discussed so much on in time and through time was mainly this thing कि एक तो however you judge yourself कि like in terms of studies, what is my way of studying, what do I prefer personally, उसके हिसाब से हमेशा अपना टाइम टेबल बनाना। whenever you're creating a routine for yourself or you're creating a a long term plan for yourself, create a plan which suits your time perception rather than you're just going by somebody else's advice कि अच्छा ऐसा करना चाहिए। It might have worked for them, it might or might not work for you. Know yourself better। ठीक है। Now let's come to general time management and consistency strategies। So one thing is habit stacking। So habit stacking is basically that we add a new habit to an existing routine that we are any which way doing। So let's say I am just starting my UPSC preparation. As of now I do not have a habit of reading a lot of books. Let's say I do not have the habit of reading newspaper. I can still manage to read books because I had been reading books in my college, but newspaper was something ki I've never read, so I do not have a habit of reading newspaper. And I kind of I don't even enjoy that much. So it feels like, oh, this is a big chore that I need to do. Now, how do I create a new habit? First of all, I pick up one point of time which I'm routinely any which way doing. So in this case, I've taken the example of solving 20 PYQs or revising 10 pages of optional and so on. But let's say for the time being, let me stick to the example of reading the newspaper. So let's say I realize ki, okay, I'm routinely having my breakfast. In general, I do not miss my breakfast. So what I can do, as soon as my breakfast ends, I pick up the newspaper and read it. Right? So habit stacking. One thing that I'm already doing, उसको मुझे एडिशनली करने में मुझे एडिशनल टाइम कुछ नहीं लग रहा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग अनदर बिहेवियर टू समथिंग दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग। Similarly, so I've given the example that I wake up in the morning and I start my day with solving 20 PYQs or revising 10 pages of optional or revising one unit of optional. So 10 pages of optional would be for somebody who's more क्या कहते हैं more through time, and revise one unit of optional would be for somebody who's more in time. So just giving an example of how things differ, right? Solving 20 PYQs could be either because so 20 PYQs ka, unless and until you have 1 year ka paper in front of you, if you have just a lamba choda compilation, it doesn't really matter whether you do 20 questions today, 20 later and so on, or you finish the end मतलब finish एक book आप एक दिन में वो finish वैसे भी नहीं कर पाओगे, right? Second example that I gave that I've written here is let's say you're struggling to find time for CSAT, that you know that you have to prepare for CSAT and you have not been able to prioritize till now. What do? You realize that after CSAT, after dinner, I solve CSAT questions for 1 hour or solve one CSAT का paper, right? Or just one section. Let's say सिर्फ मैंने RCs ले लिया या फिर सिर्फ quant ले लिया and I'm solving just that. So picking up one habit that I routinely do and adding one thing that I want to do. Habit stacking, right? जैसे वो जब books का stack बनाते तो you keep one book on the above another. So this is one habit that you're routinely any which way doing. I'm just adding another habit to it, right? It just becomes easy. So instead of creating a timeline, okay, from 10 p.m. till 12 p.m. I'll do this. I can simply say after dinner, which I'll any which way have every day. So after dinner, I can do. I'll go to. I'll solve CSAT questions, right? So habit tracking could be the first strategy. Second thing is having clarity about the task that you need to do. Sometimes we tell ourselves very generic things. Okay, I need to finish. I need to finish art and culture by next Friday.
अब नाउ आई एम नॉट इवन क्लियर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया पढ़ें, या फिर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ें, या फिर स्पेक्ट्रम का नहीं, किसका कंपाइलेशन आता है, किसका कंपाइलेशन आता है आर्ट एंड कल्चर का? देयर वन कंपाइलेशन आल्सो, एवरग्रीन, नो, एनीवे जो भी आता है, तो कोई और कंपल वो पढ़ें, या फिर वो सीसीआरटी की वेबसाइट देखें कि नोट्स पढ़ें। अभी क्लैरिटी नहीं है, राइट? एंड if you do not have the clarity, the tendency of procrastinating that task will increase a lot, right? So in order to break that procrastination, it is important that you get clarity for yourself, not just in terms of कि कहाँ से पढ़ना है, but also in terms of कि मुझे आज अभी जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे क्या चीजें करनी है। सो इफ आई टेल माई सेल्फ कि चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, मुझे लेट्स से नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ना है, राइट? बट नितिन सिंघानिया की बुक इन इटसेल्फ इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू डू, राइट? वो खुद भी काफी बड़ी किताब है। बट इफ आई डिसाइड कि ओके, लाइक व्हेन दिस टाइम आई गो टू, व्हेन आई दिस टाइम व्हेन आई विल स्टडी, आई फिनिश दीज 5 or 6 chapters. This becomes much more concrete for me, this becomes much more clear for me in terms of कि मुझे अभी अचीव क्या करना है, right? So always break down your task into, into smaller chunks so that you are able to understand कि अभी next step मेरा होना क्या है. Don't make your next step ambiguous. So whenever you're creating your to-do list, don't write finish Lakshmikant by today or finish Spectrum by today. Yeah, by next week. जैसे मतलब यहाँ पे मैंने next week का example दिया है. So don't write ये find Spectrum by next week. Instead, divide it into smaller chunks. So let's say you wrote so I used to start with post Gandhian phase first. So post Gandhian phase first, I will start with that. There are 2 units of that. I'll finish it in one day. फिर उसके बाद I used to come back to the pre-Gandhian phase. I'll finish it in another 2 days, let's say. So 1 day, so 2 days, 2 days. Then I come to the ये उससे पहले जितना वो चेंजेस वो ब्रिटिश सोसाइटी से, सॉरी ब्रिटिश रूल से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, व्हाट वाज द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट, अदर वो मिसलेनियस टाइप की चीजें. लेट्स से आई गिव 2 days अगेन, राइट? एंड 1 day फॉर द यूरोपियन अराइवल वाला सेक्शन, या प्री 1857 वाला सेक्शन. तो नाउ आई हैव अ मच बेटर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कि मुझे क्या चीजें कब करनी है, सो दैट इन 1 week आई एम इवेंचुअली एबल टू फिनिश माई स्पेक्ट्रम. If you have more clarity, it becomes much easier to take those steps, right? And ideally it's a good idea if you can prepare your next day's task list at night. So let's say अगर कल मुझे जो भी चीजें करनी है, if I have it in writing today before I sleep, it's a much better thing. Why? Because once you wake up, अब मुझे सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना कि मुझे अभी चालू क्या करना है. मुझे पता है मुझे किस चीज से चालू करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लान किया हुआ है. तो मुझे नेक्स्ट डे का अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना. I can start my day with implementing my task list, right? Now, the third thing is deep work. So there's a book called Deep Work. I am forgetting the name of the author, but so this is one thing that I've taken from there. So this person says that you should schedule time for deep work. So ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कभी भी अगर मान लो 10 घंटे भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी कैन स्टडी विद दैट इन दोज 10 hours at the same level of productivity. In general, it doesn't happen with like that. There are certain time periods when our productivity is much higher than the others. For some people, it could be towards the evening or towards the night. For some people, it is early in the morning. Some people do better in the early afternoon time, right? Find your own peak productivity time and schedule that particular time for your deep work things. So anything which requires you to for you to do a lot of which requires you to concentrate a lot, which requires you to engage with that topic a lot. आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या आप अपना ऑप्शनल कर रहे हो, एथिक्स कर रहे हो, थिंग्स विच आर मोर स्कोरिंग,
Do specify a certain time period where you are more productive and do those things at that point of time, and ensure that you're avoiding any distractions at that point of time, which means no phones around you while you're doing that work. You already tell your roommate or your parents or whoever you are living with कि भाई मुझे ये 2 घंटा मुझे अपने लिए चाहिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग दिस टाइम, एनीथिंग दैट यू वांट लेट मी नो आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे में अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल इमरजेंसी है तब तक आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, कुछ नहीं बिगड़ा जाएगा 2 घंटे में, राइट? एंड फोकस ऑन ओनली वन टास्क एट अ टाइम। सो इफ यू डिसाइडेड कि ठीक है मुझे एथिक्स में आई वांट टू डू फर्स्ट 2 यूनिट्स, फोकस ऑन जस्ट दैट। अब ये नहीं कि एथिक्स में वो पढ़ना चालू किया, फिर याद आया कि अरे मेरा ऑप्शनल का ये बाकी था, तो अच्छा चलो आधे टाइम पे मैं ये कर लूंगा, आधे टाइम पे वो कर लूंगा। दैट डीप वर्क वाली चीज फिर नहीं हो पाएगी। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट एंटरिंग दैट स्टेट ऑफ फ्लो। That state of flow becomes easier to easier to evoke if you're doing a deep work wala session where you're working at your peak productivity and you're engaging in one thing at a time and giving your whole at that point of time when you're doing that particular thing, right? And because I talked about like how you should avoid distractions at that point of time, so study with paper and pen rather than having those digital things where you're watching. So a bad way to utilize that deep work. Well, just 1 minute. Let me finish that topic, and then you can ask the question if you want to. அதையும் அந்த டைம்ல அப்படியே அந்த ஒரு வார்த்தை. Okay. So a bad time to do deep work would be कि लेक्चर देख लेते हो उस समय। लेक्चर आप बाकी समय देखो, जब रिवाइज करना है, जब खुद इंगेज करना है मटेरियल से, तब आप अपनी पीक प्रोडक्टिविटी वाले टाइम पे करो, राइट? So and if you, let's say if you have all your resources on your phone only, yeah, on a digital device only, as far as possible put them on your laptop, put them on your क्या कहते हैं iPad or that वो tabs वगैरह, go and do from those sources rather than having your phone in your hand and doing them. Why? It becomes very easy to get distracted on your phone. आपको अपने फोन में, अब अपने लैपटॉप में, लेट्स से अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना कि चलो अच्छा पैरेलली आई ओपन टेलीग्राम एंड आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, और लेट्स आई ओपन इंस्टाग्राम एंड आई स्क्रॉल, इट टेक्स मोर एफर्ट टू डू दैट थिंग। वो इतना हैंडी नहीं है जितना आप फोन में आपने सिर्फ एक 2-3 बटन दबाए और हो गया, एंड यू आर नाउ स्क्रोलिंग एंड यू आर वाइलिंग अवे योर टाइम। स्क्रोलिंग ऑन योर टैब और ऑन योर टैब तो फिर भी आसान है, स्क्रोलिंग ऑन योर लैपटॉप इज वेरी डिफिकल्ट। ट्राई करके देखना कभी, अगर कभी ऐसा लगे ना कि अच्छा मुझे इंस्टाग्राम से छुटकारा पाना है, जस्ट टेल योरसेल्फ कि इंस्टाग्राम में देख सकते हो जितना भी देखना है, बट आई ओनली वॉच इट ऑन माई लैपटॉप और ऑन माई कंप्यूटर, नॉट ऑन माई फोन और टैब। इट बिकम्स मच मोर इजियर टू लीव दैट हैबिट just because it is not convenient, right? एंड इन जनरल एज फार एज पॉसिबल, जितनी अगर आपको डिजिटली पढ़ाई करनी भी है ना, डू इट ऑन योर फोन, डू इट ऑन योर लैपटॉप और डू इट ऑन योर टैब्स। इन जनरल इट्स जस्ट अ बेटर आइडिया rather than having your phone by your side, ठीक है? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, allow yourself to feel discomfort when you're starting this thing, when you're starting to implement such a thing where you're sitting for 2 hours, let's say, and you're focusing only on one task and you've eliminated all your distractions, it might happen that some of you might feel कि I'm not feeling comfortable या मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है and so on. Allow yourself to feel discomfort. ठीक है, मुझे मैंने 2 घंटे अभी के डिसाइड किए, मैं 2 घंटे यहीं पे बैठूंगा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कोई बात नहीं, बट मैं बैठूंगा तो यहीं पे। कब तक आप बैठोगे? मतलब इवेंचुअली यू गिव इन एंड यू स्टार्ट डूइंग द थिंग दैट यू वांटेड टू डू। बहुत ज्यादा भी होगा, चलो ठीक है आपने 3-4 दिन बर्बाद कर लिए, बट आप फिर भी आके बैठ रहे हो, इवेंचुअली योर माइंड बस है कि यार ठीक है चलो अच्छा इसी की सही, right? And if you're feeling that way, you can simply repeat the statement: I acknowledge that a part of me is feeling dash. Dash could be any feeling that you're going through, but I'm okay. So you're not saying that, like, you're not ignoring that feeling which is building up within you.
You're telling yourself that I acknowledge this feeling that I'm feeling right now, but I'm also okay. कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे. Let's say I acknowledge feeling restless, but I'm okay. Keep reminding yourself this thing, right? So this is one thing that you can do. ये मेरी तरफ से एडिशनल वो चीज थी, ये बुक में नहीं था. मतलब उसमें वो था कि डिस्कम्फर्ट वाला फैक्टर था, बट द स्टेटमेंट इज माय ओन एडिशन, नॉट इन द बुक. Anyway, anybody had any question? I think somebody wanted to ask. No? Okay. All right. Now, let's say, so there are a lot of people who also tell me कि पूरा दिन निकल जाता है. I don't know where I end up wasting my time, even if I pick up my books. I still waste a lot of time. मन नहीं लग रहा होता, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ करने लग जाता हूँ. And eventually my entire day gets ruined. At night I start feel guilty, या फिर I start feeling anxious कि मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया और मेरा अब कैसे होगा सिलेक्शन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई स्वेयर टू माई सेल्फ कि नेक्स्ट डे से तो मुझे बिल्कुल पक्का हर तरीके से मुझे लगना है. एंड द सेम साइकिल रिपीट्स, राइट? सो वी आर नाउ in a sequence of bad habit which is happening again and again. Okay, there's a comment, just a second. So okay, so exactly मैम, सारा गिल्ट रात को ही होता है. हाँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे रात में ही होता है. ठीक है, चलो ओके. सो नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट दैट? कैसे ये बैड हैबिट ब्रेक करें, या ब्रेक भी छोड़ो, कैसे चेंज करें, राइट? सो अगेन, जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट हैबिट स्टैकिंग, we can also we can somewhat utilize the same principles, and we can change our habits as well. So there's generally some cue or some stimuli that like that we get. Uske baad we do certain behaviors, right? For a lot of children, you would have seen कि अभी आजकल नया जो ट्रेंड आ रहा है, that they will refuse to eat food unless and until उनके कार्टून लगे हों टीवी पे. एंड मदर्स कीप कंप्लेनिंग कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता अगर उसको वो कार्टून न लगाओ, राइट? सो देर आर सर्टन cues that happen and that leads us to certain behaviors. वो पेरेंट वाला चीज was just an example to help you understand, not a relevant part of the discussion. But the relevant part here could be, a lot of people generally have this habit that while they're eating, they would watch something on their phones, एंड वो टाइम एक्सीड कर जाता है. लेट्स से दे थॉट कि ठीक है, जब तक मैं खाना खा रहा हूँ तब तक ये स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं. 12 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट मुझे खाने खाने में लगेगा, उसके बाद फिर आई विल गो एंड स्टडी. बट व्हाट हैपेंस? खाना खाते खाते खाना मेरा 10 मिनट में खत्म हो गया, वो वीडियो 12 मिनट के लिए चल रही है, मैं बैठा हुआ हूँ, बढ़िया वीडियो चल रही है, और उसके बाद फिर खत्म होते होते मुझे साइड में एक अगला वीडियो का रिकमेंडेशन आ रहा है कि ये वाला वीडियो और देख लो, ये भी नया रिलीज हुआ है, ये भी एक नया अच्छा कॉमेडी का वीडियो है. व्हाट डू आई डू देन? आई क्लिक देयर, आई वॉच अनदर वीडियो. अरे चलो 10 मिनट का ही तो है, अभी ऐसा भी क्या हो रहा, अभी 3:35 हो रहा है, 3:45 पे स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट का वीडियो है. चलो वही 10 मिनट का वीडियो देखने लगे. फिर क्या हुआ, अगला रिकमेंडेशन, 15 मिनट का ही तो वीडियो है, 4 बजे चालू करेंगे, एंड योर एंटायर डे गेट्स वेस्टेड, राइट? सो व्हाट डू? You first understand what are the different actions that you're taking here. What is the cue and what are the different actions that you're taking here? So I eat lunch while, so this is the example that I've given here. Let's say I eat lunch while watching a YouTube video. I finish my lunch, then I tell myself one more episode and I will go to study. Right? वो recommendation मेरे पास आया and I think to myself one more episode and I will go to study. I watch one more episode then. I see the recommendation of another video. I tell myself the same thing and I watch another video, and this keeps on repeating till I start to feel a little bit tired. मेरी आंखों में let's say मुझे थोड़ा सा discomfort feel होने लगा. That feeling tired is my cue to now stop.
Then I realized that I've wasted 2 hours. तो जब तक वो मेरी आंखों में डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ था तब तक मुझे रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा था कि अच्छा मेरे 2 घंटे चले गए हैं. Right? Now that I've realized that I've wasted 2 hours, now I feel guilty. And now because I'm feeling guilty, एक तो I'm like वो तो ठीक है चलो I stopped watching YouTube. But because of the guilty emotion, I am not able to study again because now I'm going into another loop of negative thoughts कि यार मैंने तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा. लोगों ने तो पता नहीं कहाँ तक का सिलेबस खत्म कर दिया होगा, मैं तो अभी ये भी नहीं हुआ, एंड सो ऑन. राइट, सो व्हाट डू वी डू? पहले तो ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा मेरे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या है. नाउ वी look at different entry points that we can have. So the first natural entry point that we can have is कि ठीक है मैं खाना खा लूंगा बिना यूट्यूब वीडियो देखे. राइट. So if I'm not watching a YouTube video, if I'm just eating my lunch in silence, तो ये टेंडेंसी खत्म कि भाई इसके बाद वीडियो देखना है. वो तो इसी वजह से आ रही थी बिकॉज खाना खाते खाते आई वाज वाचिंग अ वीडियो, इट वाज रिलीजिंग दैट क्विक डोपामीन, तो मुझे फिर से मोटिवेशन मिल रहा था कि मुझे और देखना है, एंड आई वाज वाचिंग इट. फिर से क्विक डोपामीन. फॉर रेफरेंस ऑफ द डोपामीन थिंग, रेफर बैक टू द वीडियो ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन. बट कमिंग बैक हियर, तो बिकॉज आई एम लाइक I'm doing these two activities together, and I'm having lunch, and I'm watching that YouTube video. If I break that association between the cue, which is having lunch, and the behavior, the watching YouTube, so first entry point तो यही है, the most natural entry point. Let's say मुझे I'm okay with watching one episode, but मुझे उससे ज्यादा नहीं देखना. So what do we do? The next thing that I can decide is कि ठीक है, as soon as I finish my lunch, I'll put my uh, I'll flip my phone. I'll keep it upside down so that कि वो screen नीचे हो जाए, and I'll just close my eyes and I'll sit for 2 minutes. And then I'll ask myself, do I really want to watch the next episode or should I go and study? You give yourself that break जहाँ पे आप उस एक्टिविटी के साथ डिसोसिएट हो गए हो. As soon as you dissociate from the activity that you were earlier doing, as a almost as a compulsive thing, जैसे ही आप डिसोसिएट करते हो खुद को, it becomes much easier to do the things that you actually want to do. At that point of time, if you decide कि नहीं अच्छा अभी है टाइम, अभी इतना कुछ अर्जेंट नहीं है, तो ठीक है मुझे एक और वीडियो देखना है, कोई बात नहीं. Go and watch one more video and do the same thing again. Flip the phone, ask yourself, do I want to watch another video or do I go back to study? Eventually कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं होगा कि आप इसको बार बार करो और बार बार वो यही आता रहे कि नहीं अच्छा एक और वीडियो एक और वीडियो एक और वीडियो. वो आपकी गिल्टी कॉन्शियस आपको बोल देगी यार अब पढ़ने बैठ जाओ बहुत हो गया. Right? It's just that it will happen much more quicker rather than you wasting entire day and then realizing कि अरे पूरा दिन चला गया मेरा. Right? So this is another thing that you can do. Also, there's another thing which is called choice architecture. Architecture is basically that you design your environment in a way that you're naturally inclined to take certain actions and not and disinclined to take certain other actions. Which means कि अगर आप लंच कर रहे हो, यू ऑलरेडी डिसाइड कि मुझे अभी लंच के इमीडिएट बाद मुझे क्या चीज पढ़नी है, एंड आई एम कीपिंग दोज बुक्स एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी व्हाइल आई एम हैविंग माई लंच. It becomes much more easier for me to switch from having my lunch to switching back to studies. Rather than if my books are kept somewhere behind me, I am having my lunch here, I am enjoying my video, and then I'm constantly reminding myself that right after this video, I'll go and study. And I keep reminding myself that I'll go and study, I'll go and study, I'll go and study, but I'm not studying. Why? Because I do not have my books in front of me. Sometimes our minds act really stupid, but that's how it is. Our mind can be really, really smart, but at the same time, sometimes it can be very, very stupid when it comes to immediate pleasures. Right? So, designing your physical environment in a way that it makes certain choices easier is another way of how you can, manage your time better.
So whenever I wanted to take a nap in the afternoon, I would decide what I would do after taking my nap, and I would keep my books along like on the side of my on my bed. So when I would wake up, I would have them right beside me, and I can just while sitting on the bed itself, I can just pick those books up, take a review of whatever the things that I need to do, come in that zone of studies, sit on the table and start studying. And let's say, so I also want, during the evenings, I would also want to have tea, or, want to have something to eat. So what I would do on my study table itself, I would already, before going for a nap, I would prepare tea for myself, put that into a, वो kettle होता है ना जो गर्म रखता है. What is that thing called? I forgot the name. Anyway, तो वो गर्म रखने वाला जो भी होता है, whatever that thing is, तो उसमें I used to keep it by my side. 10-minute nap. I'll wake up. I'll flip my book. पूरा एक बार review लिया. While taking that review, I'll have my tea. Right? And because I'm sitting on my study table to have my tea, so it becomes easier for me to finish my tea and start studying rather than do something else. Right? So choice architecture is another strategy that you can employ. Let's say you were out partying with your friends. You had taken a break that day. But before you go back to sleep, you want to, let's say just for half an hour, you just want to revise certain things. Decide that before going out with your friends, keep those things on your bed before, the place that you want to go to sleep. Keep it there. Once you come back, change your clothes and everything. You have your books right in front of you. Pick those book up. आधा घंटा ही पढ़ना है. You can skim through those things. Choice architecture. ठीक है. सो बाय द ये हैबिट चेंज वाली जो चीज थी, द आइडिया बेसिकली हियर इज दैट फॉर एवरी स्टेप इन द हैबिट, जैसे हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स लिखे हैं, सो फॉर एवरी स्टेप इन दिस हैबिट you can find one entry point, and whichever entry point works for you, invade that habit there. A lot of people, so one of my friends did this thing, that he had this habit of watching watching something while he wanted to have lunch. So instead of watching random random things that would distract him during prelims, what he would do, that he would put on a lecture that he had some class that he had taken, and he would just just keep play that lecture and have his food. So while his mind is having the food, his peripheral senses are still listening to the lecture, and he's still engaged with the study material. So this was something that worked for him. Might or might not work for everyone. Again, all of us are different. It's just that I'm just giving you ideas of what you can try for yourself, right? Another thing that you can try is gamification, that you turn mundane tasks which are more boring into things that you can enjoy. Games अगर आप खेल रहे हो तो आप generally we enjoy playing games. So turn the mundane task into games. There is one app which is becoming very popular. YPT करके कुछ app है. There's some app which is there on which people are tracking their times, and they're posting their times, and they're competing against each other कि किसने आज कितनी पढ़ाई करी, and so on. Example of how gamification works. There's a one of my clients was also telling me about, there's some forest app or something. वो भी उसका भी कुछ वही concept है, that it helps you to track your time, and so if you have said that you'll study for X number of hours, you log in that thing कि अच्छा मैंने X number of hours कर लिए, तो you that forest will grow. If you say कि अच्छा मैंने ये वाला time miss कर दिया, तो वो छोटा हो जाता है forest. Something of that sort happens, right? तो वन ट्री ऐप करके कुछ तो, हाँ वन ट्री ऐप ऐसे कुछ तो भी है, वो ट्री ग्रो होते जाता है जैसे हाँ. जैसे टाइम बढ़ते जाता है. So all these things are basically gamification, right? आप अपने mundane task को आप गेम में टर्न कर दे रहे हो.
So that is one way. So these are external ways of of doing this. There's always a risk कि आप फोन में वो ऐप तो छोड़ो, आप पता चला इंस्टाग्राम और यूट्यूब और दुनियादारी में आप लग जाओ. तो a better way would be doing those things yourself. So let's say a lot of people, they take daily logs of how much time they are whatever time they are doing certain tasks. So let's say they had decided या decide नहीं भी किया, they are just taking notes of कि अच्छा ठीक है आज मैंने 2 घंटा पढ़ा. I'm writing today, I wrote the date 2 hours. Next day I sat for 4 hours, date 4 hours. Next day I sat for 8 hours, date 8 hours. Next day I again sat for only 1 hour, date 1 hour. Whatever that is. When you're continuously writing, अगर आपका ऑलरेडी अच्छा जा रहा है, कि अगर आपका लेट्स से 5-6 घंटे जा रहा है, बिकॉज यू आर राइटिंग ऑलरेडी, सो यू गेट दैट मोटिवेशन कि यार थोड़ा सा इंक्रीज करना है, राइट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपका काफी टाइम से कम ही जा रहा है, 1-2 घंटा ऐसे जा रहा है, इफ इट वॉज ऑन आवर ओन, इट माइट टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर अस टू रियलाइज कि मैंने बहुत दिन वेस्ट कर दिए. बट क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे सामने कि मैंने 3-4 दिन अपने वेस्ट कर दिए हैं, it becomes that realization comes a little earlier. So naturally, if I just leave it to myself, I might realize it after a week कि यार मैंने पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया. But if I'm writing it down, so I might realize it in 2 or 3 days, and I might then try to increase that time. धीरे धीरे अगर increase होने लगा, that gives me the motivation. वही gamification वाला concept, it gives me the motivation to do better next time, right? Uh, there are also okay. And so another way of doing this thing could be that you create levels for different time periods that you're studying. So let's say if you notice that you're naturally able to study for 2 hours daily, उससे ज्यादा नहीं हो रहा, या उससे ज्यादा मेरा वो टाइम वेस्ट में चला जाता है. आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, बट हो नहीं रहा अभी, जस्ट बिकॉज कि अभी वो मूड नहीं है, ये अभी जोन में नहीं है, तो हो नहीं रहा होता. 2 घंटे ही, मतलब 1 घंटा न्यूज़पेपर में निकल जाता है, 1 घंटा कुछ इधर उधर कर लेते हैं, and then I call it a day generally. So let's say you start with that thing. कैसा ठीक है, ये 2 hours is my level 1. I'm doing I'm doing 2 hours, like let's say 2.5 hours. So 2.5 hours, 2.5 hours, 2.5 hours I'm doing daily. But after 1 week, I've crossed level 1, I've reached level 2. Level 2 का क्या मतलब है? I'll study for 3 hours now. I'll do 3 hours daily. After 1 week, I reach level 3. I miss one day, तो अब मुझे एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. आई मिस 2 days, मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे फॉर मी टू बी एबल टू लेवल अप. अगेन वेज ऑफ टर्निंग मंडेन टास्क इनटू गेम्स, राइट. इससे ज्यादा इफेक्टिव चीज जो मुझे लगी पर्सनली, नॉट सेइंग कि दिस विल अप्लाई टू एवरीवन, फॉर सम पीपल इवन दिस लॉगिंग देयर स्टडी आवर्स might work better for them, but for me personally what I found better was, if I had decided कि अच्छा ठीक है मुझे let's say I just need to study for 30 minutes, but I pre-decide कि अच्छा इन 30 minutes में मुझे ये चीजें कवर करनी है, and those are something which I know कि वो 30 minutes के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है. नॉट लाइक कि मतलब ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स में मैंने वो डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे पूरा पूरा ये लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, नॉट लाइक दैट. बट लेट्स से मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है 30 मिनट्स टाइम, एंड आई फिनिश एंटायर पार्लियामेंट चैप्टर. व्हाट डज इट डू? टाइम जब चल रहा है, आप व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट टाइम, तो यू आर मोर एनर्जेटिक अबाउट डूइंग थिंग्स. व्हेन यू आर मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर प्रेजेंट इन डूइंग दोस थिंग्स, तो आप लॉस नहीं हो जाते. And this is especially helpful for people who are working and who are preparing for UPSC. It becomes much more this thing becomes very handy for them. कि ठीक है अभी मुझे पता है कि मेरे पास 1 घंटे का ब्रेक है, आधा घंटा मुझे खाना खाने के लिए चाहिए, मेरे पास आधा घंटा होगा. आधे घंटे में मैं आई डिसाइड माई सेल्फ कैसे मुझे ये चीज निपटा, मतलब लेट्स से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है आधे घंटे में. रीडिंग अ न्यूज़पेपर एट योर लेजर might take 2 hours, 2.5 hours, who knows. बट इफ यू हैव डिसाइड कि मुझे आधे घंटे में पढ़ना है,
you'll only focus on the main news that you have to study in terms of things that you need for UPSC. फोकस वही जाएगा, उतना ही रीड करोगे जितना चाहिए। ये नहीं कि वो एक आर्टिकल लिखा है तो मैंने फर्स्ट वर्ड से लेके एंड वाले वर्ड तक पढ़ा है। नो, आई प्रॉब्ली डू अ वर्टिकल रीडिंग। आई मेक अ जिस्ट ऑफ कि अच्छा ये मेन चीजें इसमें बोली गई थी, which is more helpful for me rather than going through the entire article and जिसमें अल्टीमेटली आई रियलाइज कि अच्छा ये तो हेडिंग ही सिर्फ इसकी काम की थी, बाकी तो मटेरियल तो पता नहीं क्या ही लिखा था, सारा जेनरिक स्टफ था उसमें। बट आई एम रियलाइजिंग दैट आफ्टर 10 minutes वर्सेस आई एम रियलाइजिंग दिस आफ्टर रीडिंग 2 paragraphs, vertically reading 2 paragraphs in like 1 minute or less than 1 minute, just because I'm doing that against time. So personally, this thing worked for me better, doing certain tasks against a fixed time period. But again, you can see for yourself what is working better for you, right? It puts you in that zone कि जल्दी जल्दी करना है and so on. तो वो थोड़ा सा आप और एक्टिव हो जाते हो, instead of passively sitting and reading material, थोड़ा सा आप और एक्टिव हो जाते हो उसी एक्टिविटी में, right? And of course, having those accountability groups, virtual libraries, productivity apps, and all these things, they can help you to track your time, compete against each other, and so on. So these are some general strategies when it comes to time management and maintaining consistency. Now, coming to a few things that you should keep in mind. So this first point was actually given by क्या नाम है उनका? By Ayush sir, जो Forum IS Academy के director हैं. So this was something that he had given. That he talks about golden hour uh, in the day. So what he suggested was whenever you wake up, start your day with doing within those first 30 minutes of the day, whatever time that you are waking up. Let's say अगर आप 11 बजे भी सो के उठते हो, फर्स्ट 30 मिनट्स जो है उसके अंदर अंदर आप बैठ जाओ पढ़ने। even if you at that point of time, even if you're studying for just 20 minutes or 30 minutes, बट आप वो फर्स्ट 30 मिनट्स में आप बैठ जाओ पढ़ने। आप उठे, फटाफट आपने ब्रश किया, मुंह धोया, बैठ गए पढ़ने। ठीक है, आई डिसाइड कि ओके आई विल डू 20 क्वेश्चंस फर्स्ट। लेट्स से ये प्रीलिम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई विल डू 20 क्वेश्चंस एंड देन आई विल कैरी ऑन विद द अदर पार्ट ऑफ द डे। व्हाई दिस मैटर्स? इट सेट्स द टोन ऑफ योर डे। आप सुबह उठते ही इधर मतलब आप यू हैव टू ऑप्शंस। आप सुबह उठे, फोन उठाया, फोन में इंस्टाग्राम खुल गया, उसमें लग गए, यूट्यूब खुल गया, उसमें लग गए, स्नैपचैट खुल गया, उसमें लग गए, टेलीग्राम में किसी ने कुछ मैसेज भेज दिया, फिर देखा कि अरे ग्रुप में तो रात में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जो मैंने मिस कर दी। नाउ यू वांट टू रीड ऑल दी 543 मैसेजेस। अब उसमें निकल गए मेरे 500 आवर्स, वो मुझे बाद में रियलाइज हो रहा है, राइट? तो या तो आप वो कर सकते हो, या तो आप सुबह उठो, फटाफट ब्रश किया, सीधे पढ़ने बैठो पहले, फिर उसके बाद देखते रहो जो भी देखना है। बट आपका क्योंकि माइंड आपका उस तरह से ओरिएंट हो गया है, सुबह उठते ही आपका पढ़ाई की तरफ ओरिएंट हो गया है, तो नाउ यू कैन डू दोस थिंग्स इजीली, राइट? एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर टेलिंग मी कि बहुत दिन हो गए, वो आई हैव नॉट बीन एबल टू कम बैक टू स्टडीज, आई वेस्टेड 1 month, आई वेस्टेड 1 week, आई वेस्टेड x number of days or whatever. Do this thing next day whenever you wake up and do that thing which you have been procrastinating on. Leave everything else behind. फोन तो अपने आसपास रखना ही नहीं है उस समय। बस उठो, ब्रश किया, मुंह धोया, बैठ गए पढ़ने। भले ही 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट पढ़ लो। आफ्टर दैट डू वट एवर यू नीड टू डू, come back to whatever the things that you had planned to study. It really works very well. Let's say you're somebody who feels very groggy in the morning कि भाई सुबह सुबह नहीं चल रहा होता दिमाग। My sister is that kind of a person who cannot study first thing in the morning. What you can do is कि ठीक है, आप उठे, आप ये you brush your teeth and so on. Let's say आप exercise करते हो, you go and exercise, you come back, you take a shower, immediately in the first half an hour of doing all these activities, immediately go and study. आप सुबह जिम जाते हो, जिम से होके आए, you took a shower, immediately first thing in the morning you sit and study, then do everything else in the world that you want to do, right?
सो गोल्डन आवर पीरियड वाला जो टाइम है, फर्स्ट 30 minutes आर लाइक द गोल्डन आवर ऑफ योर डे, दैट विल डिसाइड द टोन ऑफ योर डे कि भाई आप क्या करने वाले हो दिन में, राइट? Ideally first 30 minutes of the day में you should be focusing on studying, right? And उसके अलावा okay, so another very important thing, this particular tip was given by Vibhas sir who was from Wajiram coaching. I'm not sure वो अभी है कि नहीं है, but in my time he was there. uh, so uh, one thing that he said which created a perspective shift within me was, he said that, like, generally what our tendency is that whenever we catch ourselves कि अच्छा ये चीज नहीं हो रही है, we always postpone it to the next day, कि यार इतना दिन बर्बाद कर लिया, चलो अब कल से चालू करेंगे। कल से क्यों चालू करेंगे? अभी आधे दिन आज का बचा है, पढ़ लो भी आधे दिन में, right? So he was, I think, he was giving one example where he said that his friends used to do that thing कि, like, सुबह का टाइम अगर मान लो कहीं की कुछ और चीज में चला गया, फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट 11 AM तक मान लो अगर उनने वो नहीं बैठे पढ़ने, जबकि ही डिसाइडेड कि सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना था, 11 बज गए हैं, तो नाउ जनरली हिज फ्रेंड्स वुड डू कि अच्छा ठीक है चलो अब लंच के बाद से पढ़ना चालू करेंगे या फिर और आगे चालू करेंगे। ही वुड सिंपली टेल हिमसेल्फ कि ठीक है मैंने 3 घंटे वेस्ट कर लिया, बाकी टाइम तो बचा ले। they would immediately start doing the things that he would do. So don't look at the day as a whole कि अच्छा like या तो आज के दिन पढ़ाई होगी या नहीं होगी, नहीं। break that day into chunks, first half, second half, third half, fourth half। मैंने फर्स्ट 3 हाफ बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट 4 हाफ में आधा घंटा पढ़ूंगी बट पढ़ के सोऊंगी। आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है, 10 मिनट पढ़ूंगी बट पढ़ के सोऊंगी, so that at least I'm in that zone of studying now, I can break that procrastination wali cycle, I can get into the zone where my mind is getting oriented towards study, and at least from the next day I can hope that I can get back to my studies, just because I ended my day on studies, so my next day I'm more oriented towards picking that subject up, right? Okay, the third thing is don't wait for motivation. Motivation doesn't isn't so, of course there's one factor that we feel motivated and then we do certain work, but there's another factor or another very commonly overlooked aspect of motivation, that a lot of motivation comes from doing the work in itself। जो आपका जो इमीडिएट या शॉर्ट टर्म वाला जो चीज होती है ना, वो आपका ऐसे साइकिल होता है कि आप पहले मोटिवेट हो गए एंड देन यू डू द वर्क, बट फॉर थिंग्स विच रिक्वायर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयर doing the work comes first, then you feel motivated, and then you feel the the zeal to do further work. So don't keep waiting for motivation ki one day I'll feel motivated and then I'll study. A lot of people tell me on DM that they don't feel motivated enough to study। आप मोटिवेशन का वेट क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करना चालू करो, अपने आप आएगा मोटिवेशन। डीमोटिवेशन भी इनफैक्ट इसीलिए आ रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। आप पढ़ने बैठ जाओ, डीमोटिवेशन भाग जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, right? So that is there, don't wait for motivation, start studying and motivation will come, right? The next thing is allow yourself to get bored। if you believe कि पढ़ाई करना बहुत बोरिंग काम है, so be it। क्या हो गया अगर थोड़ा सा आपको टाइम अगर बोरियत में आपको बिताना पड़ गया? if you have decided that doing UPSC is important for me, if you have decided for this goal, become comfortable with being uncomfortable, right? Allow yourself to get bored, allow yourself to feel that discomfort of not having that excitement every at every point of time in your life, especially allow yourself to get bored while you're eating something, lunch, breakfast, dinner, these are those peak areas where most of the people get lost in doing something else। कि कभी वो फ्रेंड्स के एपिसोड देखने लग गए, उसको देखते देखते खो गए, कभी कोई मूवी लगा ली, अब वो मूवी तो 2 घंटा तो चलेगी ही, तो उसी में खो गए। allow yourself to get bored while having your lunch, dinner, breakfast, whatever, right?
Again, you can always remind yourself that even though a part of me is feeling this way, I acknowledge it, but I'm okay, right? Then, um, another reason why most people start to feel demotivated and then they stop doing the things that वो consistency वाली problem कई बार इस वजह से भी आती है, because people make their to-do list thinking that they'll achieve each and everything that they've written in the to-do list. 3 दिन हुए, they realize कि भाई उनका आधा काम भी नहीं हो पाया है, they feel demotivated and they drop it, right? Do not overestimate what you can achieve in one day. जनरली हम लोग जब अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, most of this, so this is called planning policy, if I am correct. So most of us, when we are planning, we plan in a way that we do not take into account any possible distractions or any possible thing that might happen which might not let us do the things perfectly. प्लानिंग हमेशा हमारी परफेक्ट रहती है, परफेक्ट डे के हिसाब से, बट हमारे दिन उतने परफेक्ट नहीं होते ना. So in general, if you are making a to-do list and if you are able to do 60 to 70% of the task on your to-do list, it is good enough. Do not beat yourself up कि यार इतने सारे टास्क तो रह ही गए, अब ये नहीं किया वो नहीं किया, तीसरे दिन छोड़ दिया. तीसरे दिन छोड़ने से तो वैसे भी नहीं हो रहा वो, right? And whenever you're planning, always have those 2-3 days where you have kept them only for that thing कि अच्छा भाई जो भी बचा होगा वो उस दिन कंप्लीट करेंगे. So don't overestimate what you can achieve in one day and don't underestimate in terms of कि अच्छा एक महीने में क्या क्या चीजें हो जाएंगी. एक महीने में आप बहुत चीजें, आप cumulatively day by day if you're doing things you can cumulatively achieve a lot of things. बट वो सारी चीजें एक दिन में नहीं अचीव करनी, वो धीरे धीरे करके होनी है. सो इवन इफ यू आर डूइंग इट 60%, इट इज गुड इनफ. विच एवर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू आर, आप चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो. Even right now, when people are in their last leg of revision for their mains is happening from the next week itself. Next week, ये Friday को चालू हो जाएगा mains. Even for them, for whatever they have decided कि मुझे अभी एक हफ्ते में ये चीजें करनी है, even for them, if they're just doing 60 to 70% of whatever they had decided, it is good enough. Nobody will any which way be able to revise each and everything just before the exam. राइट? तो उस चीज का टेंशन लेने की बजाय कि यार ये बचा है वो बचा है, ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, जस्ट प्रायोरिटाइज के अच्छा लाइक ठीक है, आई रियलाइज कि मेरा 100% वैसे भी नहीं हो पाएगा. व्हाट आर द टॉप थिंग्स दैट आई कैन एटलीस्ट फोकस ऑन, कि ये हो जाए. ये वाली चीजें ऐसी हैं कि अगर मान लो टाइम मिला, वेरी गुड, आई विल डू दैट. नहीं मिला तो आई विल स्टिल बी ओके. फोकस ऑन डूइंग दोस थिंग्स फर्स्ट, जो जो लाइक जो वैसी वाली कि ये चीजें होना इंपॉर्टेंट है. इवन इन दो थिंग्स, अगर लेट्स से आपने 5 चीजें लिखी थी कि यार ये 5 चीजें तो करनी करनी है, उसमें से भी लेट्स से आप 3 ही कर पाए या 4 कर पाए, इट्स ओके. यूपीएससी आपके टाइम वो टू डू लिस्ट देख के हिसाब से नहीं वो बनाएगा कि अच्छा इसने ये टास्क छोड़ा है इसी के ऊपर क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं करेगा यूपीएससी, राइट? सो इतना स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज का कि वो मेरी टू डू लिस्ट नहीं हो रही तो छोड़ दिया काम या इस तरह के. दीज आर जनरल पैटर्न्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई सेल्फ ऑल्सो, इन माई फ्रेंड्स, अराउंड पीपल व्हेन आई वाज लाइक आई वाज डूइंग कोचिंग्स एंड ऑल. तो उस समय कैसा क्या रहता था. सो ऑल ऑफ दोज आई यूज्ड टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स अ लॉट. So these tendencies are there, but avoid those things. These are common fallacies that we fall into, right? The next thing is, uh, in order to maintain consistency, it is very, very important that you break that monotony also. अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई चीज करनी है, you need to have those rest periods. And those rest periods have to be things where you can break the monotony of things. तो मतलब अगर लेट्स से आपने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे ब्रेक लेना है आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स तक मैं घर में ही बैठ के पढ़ रही हूँ, जब मुझे ब्रेक लेना है तो मैं घर में बैठ के मूवी देख रही हूँ. फॉर मी दैट वुड नॉट डू एनीथिंग, लाइक वो एज अ ब्रेक वो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ एनवायरनमेंट भी नहीं चेंज हुआ मेरे साथ कुछ. लाइक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अभी तक मैं लेक्चर सुन रही थी अपने फोन में, उसकी जगह मैंने मूवी देख ली. अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी माइनर चेंज,
कुछ खास मेरे लाइफ में उतना मतलब मुझे वो ब्रेक वाली चीज मिल ही नहीं पाई. So break that monotony, break that pattern of that routine that you're stuck with. Break that thing. Go out with your friends sometime. uh, have just if you can do nothing, at least आप जाके बाहर थोड़ा बहुत टहल आओ. अभी आजकल तो मौसम भी अच्छा हो रखा है. Go out and go for a walk. uh, have some fresh air and things. These things help you to to stay more consistent. Generally we don't take breaks fearing कि ब्रेक ले लिया तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. बट ब्रेक्स लेने पे कई अक्सर हम लोग बेटर पढ़ पाते हैं. सो अवॉइड दैट, फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप. ब्रेक नहीं ले रहे क्यों? क्योंकि पढ़ाई वो छूट जाएगी. पढ़ाई नहीं हो पा रही क्यों? क्योंकि ब्रेक नहीं लिया. कंसिस्टेंटली कर रहे थे तो बर्न आउट हो गया. इससे अच्छा तो ब्रेक ही ले लेते, बर्न आउट भी ना होता. राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. देर आर फ्यू चैट्स हियर. फॉरेस्ट ऐप, यस. वाईपीटी. ट्री रह हो जाता. ओके, ट्री रह हो जाता, ठीक है. सेकेंड. I always think two things at a time, and there's always something in my mind. Not even a second, I get three. Webab, I did not understand if what does this mean? How to manage? Acha, how to manage breaks between study sessions? I always think two things at a time, and there's always something in my mind. Not even. Webab, I need more clarity on this thing. Ye two things at a time, wala. But how to manage breaks between study sessions? First things first. If you are an in-time person, do not do not focus a lot on taking breaks. So things like Pomodoro technique, वो वाला जो वो टाइम ब्लॉकिंग वाली चीज कि आप 45 मिनट्स पढ़ोगे, 15 मिनट्स ब्रेक लोगे, वो वाली चीज आप अवॉइड करो जनरली इफ यू आर एन इन टाइम पर्सन. बिकॉज इफ यू टेक सो मेनी ब्रेक्स इन बिटवीन, वो आपकी फ्लो को हैम्पर करेगा. Naturally see when your mind and your body is demanding that break, take a break at that point of time. डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू कि नहीं मुझे 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी ही लेनी है, 55 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी ही लेनी है. फॉर इन टाइम पीपल, जनरली फॉलोइंग अ पोमोडोरो टेक्निक becomes slightly more difficult unless the pomodoro technique timer is in sync with their own their own timeline, yeah, time perception. So that is a different matter. But otherwise in general, avoid that thing. सेकेंडली अगर आप ब्रेक्स स्टडी के बीच में आप ब्रेक्स वाला अगर आपको मैनेज करना है, एक तो टेक स्मॉलर ब्रेक्स, लाइक डोंट टेक वेरी लॉन्ग ब्रेक्स. इवन इन दो स्मॉलर ब्रेक्स, डू थिंग्स विच डू नॉट रिक्वायर स्क्रीन टाइम. सो मूवी नहीं देखनी, फ्रेंड्स के एपिसोड नहीं देखने, रील्स नहीं देखनी, यूट्यूब नहीं देखना. डू सम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंस्टेड. स्टैंड इन योर बैल्कनी, जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ आर दे. अच्छा मौसम है तो बढ़िया सांस लो जाके बाहर, घूमो, थोड़ा टहलाओ. Those things will help you better than if you just open your tabs and you open your uh, phone and start scrolling there. Right? Social media is one thing which kills productivity like anything. So it's always a better idea that you do things whenever you have to take a break, do things which do not require a screen. At one point of time, I used to take one small diary with myself to the library. And whenever I wanted to take a break, I would simply start sketching on the diary. तो वो 15-20 मिनट का मुझे वो टाइम जो भी ब्रेक लेना होता था उसमें वो चीज कर ली. नॉट समथिंग व्हेन आई एम वाचिंग अ स्क्रीन और समथिंग. थोड़ा ब्रेक फ्रॉम व्हाटएवर आई वाज डूइंग, एंड आई यूज्ड टू कम बैक टू स्टडीज. या कभी लग रहा है कि मुझे लाइब्रेरी में नहीं अच्छा लग रहा है, आई यूज्ड टू गो आउटसाइड. थोड़ा बहुत बाहर ही, थोड़ा बहुत ऐसे ही टहल लिया. वन एक्सेप्शन कुड बी इफ यू वांट टू टॉक टू समबडी ऑन योर फोन, यू कैन डू दैट कि भाई अच्छा फोन में बात करते करते आपने वो कर लिया, एंड लेट्स से यू आर वॉकिंग. तो वॉक करते करते आपने बात करी, दैट इज स्टिल फाइन. बिकॉज एक तो वो चीज कि यू आर नॉट विजुअली एंगेजिंग योर सेल्फ विद द फोन, तो वो टेंडेंसी ऑफ कि वन वीडियो आफ्टर दी अदर आफ्टर दी अदर आफ्टर दी अदर वाली चीज नहीं होती. प्लस आपका वो चीज है कि वी आर ऑल्सो वॉकिंग, यू आर ऑल्सो डूइंग सर्टन अदर एक्टिविटी, सो इट जस्ट गेट्स बेटर टू कम बैक, इट गेट्स easier to come back to studies. Right. So I hope that answered the question. If there are any more questions, do let me know.
Otherwise, we'll wrap up. Ma'am, how to maintain consistency for a long time means 2 days we are going very productive and third day consistency break हो जाती है. Okay, so first things first, कंसिस्टेंसी की साइकिल रहती ही रहती है. मतलब वो प्रोडक्टिव, सो नॉट कंसिस्टेंसी की, बट प्रोडक्टिविटी की साइकिल रहती ही रहती है. देयर वुड बी डेज व्हेन वी आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव. We might be able to study for 10, 12 hours. But there will naturally come days when we are not able to study even for 6 hours. And that is okay to realize. It's just that we need to manage कि अच्छा वो 6 घंटे वाले जो दिन है वो ऐसा नहीं है कि वो हर दिन 6 घंटे वाले दिन हो रहा है और साल में एक बार दिन आता है जब मैं 10, 12 घंटे पढ़ रही हूँ. वो चीज अवॉइड करनी है. As far as you're able to come back to your like you're just maintaining that thing कि I'm coming back to my studies irrespective of whatever my productivity is. मैंने पहले दिन 2 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की, थर्ड डे में ही कम पढ़ाई हुई. उसकी वजह से इफ आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ कि यार आज तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, कल फिर से ट्राई किया, आज भी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई तो अब छोड़ ही दिया, वो नहीं करना है. जस्ट कीप कमिंग बैक टू दिस थिंग कि लेट मी कम बैक. जितनी पढ़ाई होगी उतनी करेंगे, बट लेट मी कम बैक. ऑल्सो realize there would be certain points of time when your body or your mind would demand breaks from you. So if you're feeling कि बहुत टाइम हो गया है, 3, 4 दिन हो गए, उससे ज्यादा टाइम हो गया, and I'm just not able to get back to my studies, it might be your uh, it might be an indication that you might need a break at this point of time. Go out, do something fun which is different from the context that you're in. So let's say अगर आप अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, go out with your friends to anywhere, to, let's say you just sat in a cafe, you had a fun time with your friends, come back, have come back to studies. So half day break, but do during that break do something where you're enjoying yourself and which is a little bit outside of the context that you're any which way present in. Yes. Another thing that you can actually try is also changing the context of the place where you're studying. So what I used to do was, let's say I used to study at my home majorly. Even while I was in Delhi, I used to study in my room majorly. Sometimes I would go to the library. 3, 4 days I would study in the library. I would get into that zone. I would come back to my room. फिर अपने रूम में कुछ दिन पढ़ा, फिर जैसे ही मुझे लगने लगता था कि यार थोड़ी सी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, आई वुड गो बैक टू द लाइब्रेरी. 3, 4 दिन फिर लाइब्रेरी पढ़ा, अगेन केम बैक टू माई रूम. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ ना कि घर में एक अलग एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी में अलग है. मान लो लाइब्रेरी और घर दोनों नहीं काम कर रहा. आई यूज टू गो टू लोधी गार्डन, आई यूज टू टेक माई बुक्स देयर, थोड़ी देर वहां जाके पढ़ लिया. बट ठीक है, बहुत इंटेंस स्टडी नहीं हो पाएगी वहां जाके, बट एक थोड़ा मूड चेंज हुआ, थोड़ा माहौल चेंज हुआ. And I can then, with that freshness in my mind, I can then come back to my studies later. So the reason for why we are not able to maintain that consistency over a longer period of time is mainly because of the monotonous cycle that we get stuck into. There could be other reasons also, but ये बहुत major reason होता है कि बहुत monotonous चीजें होने लगती हैं. राइट, वो वही किताबें, वही चीजें, वही वही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा लाइफ में. The more you feel stuck, the worse it gets for you to be able to maintain consistency at that point of time. So it's very very important that you maintain your social life somewhat. I'm not saying that you go out with your friends every night. मतलब फिर तो नहीं, मतलब फिर तो मुश्किल ही है. But once in a while, go out with your friends, have some fun time. फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, फैमिली के साथ जाओ, कजन्स के साथ चले गए. बाहर नहीं जाना तो घर में ही कुछ प्लान कर लिया, किसी और के घर में प्लान कर लिया, क्योंकि अपने घर में तो आप वैसे भी पड़े रहते हो पूरा दिन. Right? So change the context. And I discussed that वो half day वाला concept in one of the previous webinars. If you refer to those videos, you'll be able to understand. ठीक है? Any other question or should we close? Hello, ma'am.
मैम जैसे भी आपने बताया ना, यू टॉक अबाउट टू ब्रेक द मोनोटनी एंड ऑल। मैम जैसे कि अब ये सिचुएशन ऐसे आ रही है कि बहुत देर से ऐसे हम कोई प्लान करते हैं, जैसे हम ट्रिप पे जाएंगे या कोई आउटिंग पे जाएंगे, लेकिन इट गेट डिलेड आफ्टर मीन्स वीक आफ्टर एन वीक। तो ऐसा माइंड में होता है कि एक बार ट्रिप लगा लें या एक बार थोड़ी आउटिंग कर ले, उसके बाद परफेक्ट तरीके से बैठेंगे। लेकिन अगर वो इंसिडेंट हो ही नहीं रहा है, जैसे अब किसी से मिलना हो, उससे भी हम मिल नहीं पा रहे हैं, फिर हम डिले कर रहे हैं कि एक बार मिल लें उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ेंगे। तो ये वो एक होते हैं ना कि अर्ज सी बन जाती है कि वो एक इवेंट हो जाए, तो उसके बाद चाहे वो किसी से मीटिंग हो या आउटिंग हो, उसके बाद फिर आराम से स्टेबल होके पढ़ेंगे। ये भी एक मतलब लूप सा बन जाता है मैम। So again, don't wait for perfect things to happen for us to be able to get back to studies. जैसे मैंने उसमें वो बोला था ना कि ये इस चीज का इंतजार मत करो कि अब नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। मतलब ऐसी कौन सी कंपल्सन है, ऐसा कहाँ लिखा है कि आप जब तक ट्रिप पे नहीं जाओगे तब तक आप लाइक यू कैन नॉट हैव फन ऑन योर ओन एंड यू कैन नॉट गो लाइक यू कैन नॉट कम बैक टू योर स्टडीज। आपका फ्रेंड्स के साथ मान लो नहीं प्लान बन पा रहा फॉर वट एवर रीजन, बट देर यस आर मैम। वेज दैट यू कैन हैव फन ऑन योर ओन ऑल्सो। Go out and explore things on your own. Take your cousins along, जो भी खाली बैठे हो, जो भी कॉलेज वॉलेज में इधर उधर घूमा करते हैं, उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं के साथ कहीं चले गए। नहीं उनको लेके जाना, आप खुद ही कहीं चले जाओ। ओके ओके। Go out, have some fun. Like, there are lots of things that you can do even on your own. यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। When I was in Delhi, I used to, I had joined not joined an organization. So there was this organization that used to organize a lot of painting workshops and art-based workshops. I used to go there and like once in a while, I used to go and attend those workshops. They used to be for 3-4 hours long. वहाँ पे बढ़िया पेंटिंग एंटिंग बनाई, बढ़िया अलग अलग लोगों से बात करी. I used to go alone there. But because there were like-minded people who were interested in the same thing, तो अलग अलग लोगों से मिले, बढ़िया पेंटिंग बनाई. I made some friends there. ओके I have ओके। even watched movies alone. हाँ मैम, वो तो चलता है तो यार, वो सब यूपीएससी वाले चीजें भी अकेले है. ही देखते हैं। तो well, there are ways that you can do, like there are things that you can do on your own also. Again, UPSC journey is a journey where थोड़ा सा आइसोलेशन एंड थोड़ा सा वो चीज जो होती है ना दैट यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, वाली चीज थोड़ी सी आ ही जाती है इन जनरल. तो वो यस चीज मैम एक्सेप्ट एक्चुअली। करके हम लोग लाइक लेट्स फाइंड वेज दैट वी कैन डू दैट without like having to depend on somebody else, यस मैम। right? The thing that is required is कि आप मोनोटनी अपनी ब्रेक करो. अब वो मोनोटनी आपको ब्रेक करने के लिए आपको जो भी चाहिए आप वैसे कर लो. कि भाई ठीक है, अच्छा मेरे फ्रेंड्स नहीं मान रहे, I'll go to let's say I'll go to a ये क्या कहते हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कह रहे सर, बैडमिंटन क्लब. I'll play badminton there. यस मैम ज्यादा था तो क्या सामने वाले को नहीं जानते होंगे, बट क्या हुआ, बैडमिंटन तो फिर भी खेल ले रहे हैं. एक्चुअली। कुछ कॉन्टेक्स्ट तो मेरा चेंज हो ही गया ना फिर भी. जी मैम। सो डोंट क्रिएट दोस परफेक्ट सिनेरियोज इन माइंड कि नहीं जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं हो सकती. ऐसा जनरली हाँ मैम, नहीं यही है. होता है, यही बेसिकली हो रहा है कि जब तक मतलब कर लेते हैं फिर एक ही बार पढ़ेंगे, वो बैठने वो सिटिंग बनाएंगे तो। वो इट्स द सेम थिंग एज कि जब तक ये अब इतना दिन बर्बाद हो ही गया तो अब बाकी दिन भी बर्बाद कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे से पढ़ते हैं. यस मैम। वो वही वाली पॉलिसी है. या फिर अच्छा अभी तो ये 2:39 हो रहा है, तो अभी जब वो 3 PM होगा हम तभी पढ़ने बैठेंगे. हाँ मैम, तो ऐसे अभी मैम वो इवन 21 टाइम मिनट देख जो के मुझे ना, बर्बाद ही करने हैं अब वो. तो एक्चुअली मैम वही जैसे कोई 245 हो रहा है, 145 हो रहा है, कि हम इवन टाइम पे आके ही देखें कि एट वही मतलब वो 3 ऐसा पे। कौन सा रूल है कि अच्छा आपको इसी टाइम पे पढ़ सकते हो, उससे पहले नहीं पढ़ सकते. या ये कोई आप। अजीब कोई और नंबर वाले टाइम होंगे उसमें पढ़ना अलाउड नहीं है, कहाँ लिखा है ये. तो डोंट क्रिएट अननेसेसरी कंडीशंस फॉर योर स्टडीज. अलाउ योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा मन है ये करने का, जब भी ट्रिप बनेगी आई विल गो एंड हैव फन. बट दैट डज नॉट मीन कि वो ट्रिप नहीं बन रही तो मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी. These are conditions that we create ourselves in our mind. These are conditions that we can break in our mind. यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। Okay. Anybody else? No? All right. So this brings us to the end of this webinar. I hope all of you had some insights from this webinar.
over time there are certain things which do tend to get repeated, because things are connected with each other. There were certain things which I had already spoken about in the focus and concentration wala webinar, which I had taken, which I had referred to again in this webinar. Again, because it's not like कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अलग अलग चीजें हर चीज में नहीं आती रहेंगी. So it's just that for specific things there could be specific strategies, but again there are things because these are interrelated things, तो वो कुछ कुछ चीजें आपस में मिक्स होती रहती हैं. So that is there. There's one chat. Okay, ठीक है. Thank you all of you for joining, and have a good night. Bye bye. Thank you, Thank you, ma'am. For ma'am. the next webinar, if you want to join. What is the topic of the next webinar? क्या topic है? Okay, addressing fear of failure. ठीक है. So next Friday we are meeting for the topic addressing the fear of failure. Anybody who wants to join in, are most welcome to join. Okay, so this brings us to the end of the webinar. Thank you all and good night. Bye-bye. Thank you, ma'am.